We all deserve a beautiful life, and a beautiful life begins with a beautiful health. When we fall in love with ourselves, care for ourselves, understand ourselves, good health becomes a possibility. The Glowing Foodies is all about exploring that possibility. The idea is not just about exploring the joy of cooking, eating, and growing our food, but it's about connecting with our inner selves and the nature around us. So let's explore more, let's learn more, let's experiment more. In this new year, let's begin once again and make a fresh beginning. हैप्पी न्यू ईयर एंड अ बिग हेलो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप लोगों का तो पता नहीं, बट हमने आपको बहुत मिस किया। और इसके अलावा जो दूसरा काम किया वो था एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर अबाउट फूड, न्यूट्रिशन, रेसिपीज एंड ऑल द डिफरेंस इट कैन मेक टू आवर हेल्थ। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर नहीं तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन एंड चेक आउट द लवली वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड आउट देयर। So to begin this new year, we thought of cooking a 3-course festive meal. एक ऐसा meal जो आप easily बना सकते हैं, that is super delicious and of course nutritious with some seasonal goodness too, because that's what Glowing Foodies is all about. So we are gonna cook today a snack, a main course and a dessert. ये एक फ्यूजन मील है जिसमें सारी रेसिपीज को थोड़ा सा ट्वीक किया गया है एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ऑल ऑफ देम आर वेजिटेरियन रेसिपीज। सो जो लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं दे कैन ईजिली रिप्लेस द डेयरी मिल्क विद अ प्लांट बेस्ड मिल्क ऑफ देयर ओन चॉइस। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। An apple a day keeps the doctor away. But did you know, if the apple is in your dessert, it can even keep the blues away. सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ के एप्पल्स लेंगे, उनको पील करके छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस कर देंगे। Then we'll roast a cup of rolled oats. Using steel cut oats won't give you that kind of impact in this recipe. और उसके अलावा हम 1 कप whole wheat flour यूज़ करेंगे, not maida or refined flour, because you know whole foods over refined foods any day. फिर हमने 1 कप गुड़ पीस के इसमें डाल दिया। उसके बाद आधा कप ड्राइड स्ट्रॉबेरीज और डेट्स। यू कैन गो फॉर ड्राइड फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस लाइक एप्रिकॉट्स, रेजन्स, ब्लूबेरीज etc. Then we add a cup of crushed almonds. You can use any nuts of your choice and mix them well. अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर डालेंगे, विच गिव्स इट अ वेरी वार्म एंड फ्रैग्रेंट फ्लेवर। फिर हमने 1 टेबलस्पून शहद डाल दिया। आई एम नॉट यूजिंग रिफाइंड शुगर बिकॉज द लेस रिफाइंड वर्जन्स लाइक जैगरी, हनी, डेट्स, they make the food sweet and add essential nutrients too, which doesn't happen with the refined sugar. Now we'll be pouring a cup of melted homemade butter too. अगर आपके पास होममेड बटर नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या कोई अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी है इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की। सो टॉस इट वेल एंड व्हेन यू ईट इट, all these different textures, powdery, crunchy, chewy, they will definitely please you. Moreover, apples are in season these days, so it seemed perfect to cook a dessert out of them. Now we'll grease a large baking pan and first set a layer of apples into it. मैंने एप्पल्स को पहले से कुक नहीं किया, लेकिन उनको छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस कर दिया सो दैट दे गेट कुक्ड वाइल बेकिंग। अब इस पर बाकी सारा मिक्सचर भी डाल दिया एंड स्प्रेड इट इवनली विद द हेल्प ऑफ अ स्पैटुला। नाउ वील बेक इट इन अ प्री हीटेड ओवन फॉर अराउंड 30 to 40 मिनट्स, लेकिन बीच में इसको चेक करना ज़रूरी है दैट इट इज़ गेटिंग कुक्ड वेल। Meanwhile, we'll start preparing for our snack, which is the classic falafel with a yogurt dip. It's a Middle Eastern snack made with chickpeas, herbs and spices. You can eat it in your salads and sandwiches too, but today we are using it just as is for snacking. इसके लिए आपको 1 कप सफ़ेद चने रात में या फिर 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने होंगे।
उसके बाद उनका पानी ड्रेन आउट करके थोड़े फ्रेश पानी से इनको वॉश करना होगा. नाउ ऐड इट इनटू द फूड प्रोसेसर with 1 chopped onion, 5 to 6 cloves of garlic, 1 cup of chopped coriander and then grind. अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप इन्हें नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट इन दैट केस दे विल हैव टू बी डन सेपरेटली एंड देन मिक्स टुगेदर. इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर या जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून बेसन या चिकपी फ्लोर ऐड करेंगे. दिस विल हेल्प टू होल्ड द मिक्सचर टुगेदर. नाउ मिक्स इट वेल एंड मेक स्मॉल टिक्कीज आउट ऑफ इट. Then brush them with some olive oil or vegetable oil. This is a very healthy recipe because of its ingredients and moreover we are baking it and not deep frying or shallow frying. चलिए अब देखते हैं एप्पल क्रम्बल का क्या हुआ. Oh wow, it's done. So it's such a relief to see a food coming out of the oven and cooked well. Now let's put these falafel into the oven for baking up to 20 to 25 minutes. बीच में एक बार इनको फ्लिप करना ज़रूरी है आफ्टर 15 मिनट्स और सो, ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए. जब तक ये तैयार होता है, लेट्स असेंबल द डिप टू एन्जॉय इट. आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल with 1 cup yogurt or homemade curd, 2 tablespoons of eggless mayonnaise, half teaspoon of pink salt, a pinch of black pepper, some oregano and chili flakes, 1 tablespoon of olive oil and whisk it all together. Now let's proceed to our main course, which is the pasta in pesto sauce. It's an Italian cuisine. पेस्तो सॉस मेनली बेसिल से बनाई जाती है, बट यहाँ हम स्पिनच या पालक यूज़ कर रहे हैं. द होल आइडिया इज़ टू एक्सप्लोर मोर इंटरेस्टिंग वेज टू फीड द हाईली न्यूट्रिशियस सीजनल एंड लोकली अवेलेबल पालक टू योर फैमिली. सो वी आर ब्लांचिंग अ कप ऑफ स्पिनच. एक पैन में थोड़ा गर्म पानी करके लेट इट कुक फॉर 5 to 7 मिनट्स. अब इसको हम ब्लेंड करेंगे विद हाफ कप ऑफ आमंड्स एंड कैश्यूज, around 70 grams of paneer or tofu, 1 teaspoon salt, half teaspoon black pepper, 1 cup of milk and a handful of fresh coriander or dhania. अब पास्ता को कुक करने के लिए now we'll chop and saute 4 to 5 cloves of garlic in 2 tablespoon of olive oil. इसके बाद 1 या 2 रेड चिलीज स्लाइस करके उसमें डाल दिया. देन वील ऐड अ कप ऑफ चॉप्ड मशरूम्स. इट कैन बी एडेड एज पर योर लाइकिंग, बट मशरूम्स आर वेरी रिच इन B vitamins, potassium and selenium and this is one of the ways to add mushrooms to your food. इसके बाद 1 कप ब्रोकली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ and then it has to be steamed for a while. Broccoli is also a very good source of proteins, vitamins, minerals and even folic acid. इसके बाद मैं इसमें कुछ बेल पेपर्स ऐड करूँगी और ये देखिए अब हमारा पास्ता भी हो गया है. Let's drain out the water and add it to the pan. After this, we'll just pour the pesto sauce to it and toss really well without breaking the pasta and the vegetables. At last, we'll pour some cherry tomatoes or chopped tomatoes for some color burst and see, it's ready. That's all for today. Wish you all a very happy new year. May you achieve all your goals in 2021. If you enjoyed today's video, please show your love and support with a thumbs up below.
And yeah, please let us know how you are celebrating this new beginning. You can drop in your comments in the comment section below. Have a good day. See you next time.